as you know that we are discussing the conservation of natural resources. In previous lecture, we discussed what are natural resources and how there are different natural resources. And in previous lecture, we discussed only one natural resource, that was conservation of soil. I hope you understood that topic. Now, today we start with another natural resource, that is water. So, the conservation of water. Dear students, as you know that water, it is an elixir of life. And among all natural resources, water जो है, it is very important for a human life. As you know that this water, a drop of water is worth more than a sack of gold for the thirsty man, isn't? That is why water is more important as compared to other natural resources. As you know that water, it is the basic need of each and every thing that are on the environment. ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट चाहे नेचुरल है और मैन मेड रिसोर्सेज है और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, अर्थ और नॉन ह्यूमन बींग्स, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ठीक है. So water conservation is what that can reduce the scarcity of water. It aims to improve the efficiency of use of water and reduce losses and waste. ठीक है. Conservation, as you know that it is the protection of water. How can we protect our water from wastage? How can we protect our water in order to prevent the drought, in order to prevent the scarcity of water? Because in some areas there are they faces the problem of drought, they faces the problem of scarcity of water, especially during the summer season. So in order to prevent these problems, we conserve our water. ठीक है. As you know that day by day, due to hot temperature या due to global warming, जो वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये दिन ब दिन कम हो जाता है. ठीक है. सो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व अवर, टू प्रोटेक्ट अवर, टू स्टोर अ वाटर फॉर फ्यूचर पर्पज. ठीक है. सो देयर आर सम मेथड्स बाय विच यू कैन कंजर्व द वाटर. सो फर्स्ट इज अवॉइड लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स. ठीक है. बिकॉज जितना भी टैप से लीकेज से थ्रू थ्रू लीकेज वाटर वेस्ट हो जाता है, अगर हम उसी वाटर को कंजर्व करेंगे, मे बी जिस एरिया में वाटर नहीं है वहां पे वो यूज हो जाएगा. Turn the tap of water when not in use, especially when you brush your teeth or wash clothes. ठीक है. आप देख रहे हैं ये हम डे टू डे लाइफ में हम ऐसा कर दे. So it is our responsibility to conserve the water at ground basis. Rainwater harvesting is the another method to conserve water. ठीक है. The water supply should be limited in those areas which enjoys the unlimited water supplies. Technical methods by which you can conserve water are rainwater harvesting, historical water bodies or ponds. So these are the methods by which you can conserve this water. ठीक है. आप अपने, अगर आपको लग रहा है कहीं पे लीकेज है इधर इन द टैप और इन द पाइप, सो आप उसको रिपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू सेव द वाटर. सो जब पानी की जरूरत नहीं होगी, आप पानी तब तक बंद रखेंगे. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही रन पानी हो रहा है यहाँ से आप कोई और काम कर रहे हैं. ठीक है. या थ्रू टेक्निकल मेथड से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज या पॉन्ड्स, आप पॉन्ड्स बनाएंगे, आप इन दैट फॉर्म यू कैन कंजर्व द वाटर. एज यू नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज अ प्रेशियस रिसोर्स ऑन अर्थ. ठीक है. So these are some images of water conservation. See, this is rainwater harvesting. ठीक है. जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स हम बनाएंगे, ठीक है, या आप करेंगे जैसे इरिगेशन में आप पानी यूज करते हैं, आप ऐसे थ्रू पाइप्स वहां पे यूज करेंगे, और जिस एरिया में सिर्फ पानी नीड होगी वहां पे तब आप अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रखेंगे, जहां पे जरूरत नहीं होगी वहां पे आप अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं रखेंगे. या आप ऐसे टैंक्स में पानी स्टोर करके रखेंगे थ्रू टैंक्स, फिर ये थ्रू पाइप्स ये डिफरेंट सेक्शंस में सर्व हो जाता है. ऐसे जो है पानी स्टोर हो जाता है या कंजर्व हो जाता है. ठीक है.
because if you can save water, you can save one's life. ठीक है? So in previous lecture we discussed one natural resource, that was conservation of soil, and today we discuss conservation of water. Now the next natural resource that we conserve is biodiversity. So what is biodiversity? ठीक है? Biodiversity provides the base for the livelihoods, cultures, economies of several hundred millions of people, including farmers, fisherfolk, forest dwellers, and artisans. It provides raw material for a diverse medicinal and healthcare systems. It also provides the genetic base for the continuous upgradation of agriculture, fisheries, and for critical discoveries in scientific, industrial, and other sectors. The rapid erosion of biodiversity in the last few decades has impacted on the health of the land water bodies on the paper. ठीक है? So biodiversity is also very important, and we have to conserve this biodiversity because it provides the livelihoods for different sectors of the person. ठीक है? Now, how can you conserve the biodiversity? There are four methods by which you can conserve this biodiversity. One is legislation, second one is in situ conservation, next is ex situ conservation, next is recording indigenous knowledge. The first, what is legislation? Legislation means formal policies and programs for conservation and sustainable utilization of biodiversity resources dates back to several decades. So we should formulate some policies and programs in order to preserve this biodiversity. So जब हम programs या rules हम फ्रेम करेंगे, फिर हमें उन रूल्स और प्रोग्राम्स को फॉलो अप करना है through which you can conserve the biodiversity. In situ conservation is next method. Conserving the animals and plants in their natural habitats is known as in situ conservation. आया समझ में? सो इन सितो कंजर्वेशन होता है अपने ही हैबिटेट में इधर प्लांट्स और एनिमल्स को आप कंजर्व करेंगे, दैट इज इन सितो कंजर्वेशन. Ex situ conservation means conservation of plants and animals, or preserve or protect them away from their natural habitat. Is it clear? Recording indigenous knowledge, the lives of local communities are closely interwoven with their environment and are dependent upon the immediate resources for meeting their needs. ठीक है? So हमें तो कुछ programs या policies frame करने हैं, फिर उन पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को जब आप फॉलो अप करेंगे, यू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. या जो प्लांट्स और एनिमल्स में उनके अपने हैबिटेट में उनको प्रिजर्व करना, या आउटसाइड द हैबिटेट उनको कंजर्व या प्रिजर्व करना. नेक्स्ट इज आप देखेंगे लोगों की नीड्स क्या है, उनको क्या क्या डिमांड्स है, बिकॉज जो पीपल है दे आर डायरेक्टली इंटर रिलेटेड विद द एनवायरमेंट. ठीक है? सो दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. See, this is biodiversity by which you can conserve this. This is biodiversity. See, these are the animals or water bodies. Save biodiversity. Finally, you can save life. Because जो environment है, it is directly related with the people. ठीक है? इधर प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, दे आर डायरेक्टली विद द पीपल. सो इफ यू कंजर्व वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, यू आर डायरेक्टली कंजर्विंग द लाइफ ऑफ द पीपल. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट and the last of natural resource is the forest, conservation of forests. As I know that our government has made some laws in order to prevent the deforestation or unnecessary felling of trees. Government has decided to declare certain forests as protected areas. These protected areas are called reserves or wildlife sanctuaries. Here no one is allowed to hunt animals, है ना? जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा है, सो वहां पे
no one is allowed to hunt those animals. So there are about 150 wildlife sanctuaries in India. People come from all over the world to see these sanctuaries. They consist of some of the most beautiful and rare animals, isn't? So different wildlife sanctuaries है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वहाँ पे जो वर्कर्स जो वहाँ पे यूज होते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे, उन्होंने सम एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ जो प्लांट्स है या बाकी जो सेंचुरीज है, उनको प्रिजर्व किया है. वहां पे उन्होंने कुछ रूल्स रखे हैं सो दैट जो पीपल है जो डिफरेंट एरिया से आते हैं वो सिर्फ उसको विजिट करते हैं, हंट वंट वहां वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो बाय दीज rules they can conserve the forest. So methods क्या है conserving forest? Conservation of forest is a natural problem, so it must be tackled with perfect coordination between forest department and other departments. ठीक है. So conservation of forest जो है, आप इसको कंजर्व कर सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है और आप इसको कंजर्व कर सकते हैं जब आप बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ काम करेंगे. ठीक है. इट मीन्स यू हैव टू कोलैबोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, देन यू कैन कंजर्व द फॉरेस्ट इन अ बेटर वे. ठीक है. People's participation in the conservation of forest is very important. ठीक है. बिकॉज जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में, स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में, यू विल नॉट गेट सक्सेस. ठीक है. जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे कि आप कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, यहाँ से आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करते हैं बट वहां से लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट participation of people is very important in conservation. Cutting of trees in the forests must be stopped at all costs. Afforestation or special programs you have to organize in order to aware the people regarding the afforestation and disadvantages of deforestation. Celebration of all functions, festivals should proceed with tree plantation. ठीक है. सो ऐसे आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. सो जब भी कोई प्रोग्राम, कोई सेलिब्रेशन होगा, अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे विद ट्री प्लांटेशन से, इससे आप ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स दिन ब दिन ज्यादा इंक्रीज होंगे और लोगों में अवेयरनेस हो जाएगी, उनमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा प्लांटेशन में. ठीक है. कटिंग ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है. ग्रासलैंड शुड बी रिजेनरेटेड. Forest Conservation Act 1980 should be strictly implemented to check deforestation, because ये एक्ट बनाया गया जब देखा गया कि दिन ब दिन ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है. तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया सम अमेंडमेंट्स या सम एक्ट्स उन्होंने फॉर्मुलेट किए फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बनाया गया और इसको फिर काम में लगाया गया 1980 में. इसके अंदर जो है डिफॉरेस्टेशन को ये प्रिवेंट करता है. ठीक है. Several centers of excellence have been set up and award should be instituted. Because जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं थ्रू गिफ्ट्स, थ्रू रिवॉर्ड्स, सो उसको अप्रिसिएशन मिल जाती है और वो काम again and again कर लेता है. So that is why we should appreciate those workers who are involving in the conservation of the forest. ठीक है. या who are organizing these programs which are based on the conservation of natural resources. So we should appreciate them. We should provide them gifts, rewards in order to get them interested, in order to get them attentive in preserving these natural resources. ठीक है. See, this is the images of the forests and it is conservation. ठीक है. जैसे अगर हम स्कूल में कोई एक्टिविटी करेंगे फ्रॉम लो एज ऑफ जो लो स्टेज ऑफ क्लासेस है, वहां पे उनको हम एक एक्टिविटी रखेंगे कि आप ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स करो, एक दिन रखेंगे या एक क्लास में. सो उनको फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में उनको कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं, हमें ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमारा एनवायरनमेंट इम्प्योर हो जाता है, प्योर हो जाता है. ठीक है. फ्रेश एयर इज अवेलेबल थ्रू द प्लांटेशन एंड वी कैन कंजर्व द forests through plantation. ठीक है. आप देखिए, बिकॉज जब आप ये एक्टिविटीज करेंगे इन डे टू डे लाइफ में या आप करेंगे
एक्टिविटीज करेंगे, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई भी फंक्शन सेलिब्रेशन होगा either at home or at social life or at society or at any institution, so you can start any type of the program with plantation. So finally, the government of India formulates some amendments in order to conserve the natural resources. So government of India, they formulate some laws and acts which have been passed in Indian constitution. The main purpose of these laws was only to protect and conserve the natural resources. ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने तब इनको एक्सेप्ट किया इन लॉज को जब इन्होंने देखा कि इनका मेन एम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो सम ऑफ देम आर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, Forest Conservation Act 1980 एंड चिपको मूवमेंट 1988 जो बायोडाइवर्सिटी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है. ठीक है, सो ये एक्ट जो है जब हम इनके तहत चलेंगे, when we follow these acts, so we find preserve or we conserve the natural resources directly. ठीक है, so जब आप natural resources को conserve करेंगे, you are directly conserving the life and you are saving the life of an individual. So this was all about the resource conservation. Dear students, I hope you understood the natural resources, how can we conserve the different natural resources by following certain methods. So thank you so much for this